Good morning, everyone. We'll do a very important topic today, which is called Einstein's mass energy equivalence or mass energy equivalence. That is E equal to mc square. This is a very, very important formula which was given by Einstein and by taking relativity into account. So, you see what happens here. Let us suppose that there is a body in which a force F is acting. So, if F is a, say, for example, F is a force which is acting on a body and which is having a mass m. So m is the mass of the body and it is acted upon by a force F. And now let us suppose that this travels a distance dx or it travels a distance dx after the application of force. तो इस पे अगर force लगेगी तो this body will move a distance dx. Now in this case what we will be seeing that let us say that how much work is done by displacing a mass m when it is acted upon by a force F and it travels a distance dx. तो देखिए वर्क डन कैसे दिया जाता है. वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. Now in this case force is F and displacement we are taking small dx, and say this is a small work done, this we write dw. Now you see this work done will be stored as the kinetic energy of the body. This will be kinetic energy of the body. So this dw is stored as kinetic energy and we write this as dt. T means kinetic energy and we can write that this is equal to f dx. अब ये बन गया आपके पास this formula. So therefore the kinetic energy will appear work done will appear as a kinetic energy, and kinetic energy we can write it as dt is equal to f dx. So I am writing dt is equal to f dx. So let us write this to be equation number 1. And now let us say that any instant of time the velocity of the body is v. If body move कर रही है, if v is its velocity at any time, then we always write v is equal to what we write dx upon dt. We always write dx upon dt, and let us say that what we said that its mass is m. Now since we are dealing with now relativity, so we have seen in the last article that mass is not a constant quantity. Once it is in motion and comparable to the very high speed, say for example, then mass has a formula that m is equal to m naught divided by 1 minus v square by c square and its under root. ये इसका इतना मास होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ यहाँ पे. So we write this to be, say for example, equation number 2. इसको आपने लिख दिया equation number 2. कि mass m जो है, it is relativistic mass now and we always write in this manner. Now also we know that the force F can be defined as what? Rate of change of momentum. That is force F can also be write ddt of mv. ये हमें पता है, we can always write rate of change of momentum gives you force. Now this is ddt of mv. In this case you see in relativistic mechanics we are dealing with relativity. So in relativistic mechanics अब ये बताइए कि m क्या चीज है. m is mass and mass changes once the velocity of the body is very very high. तो यहाँ पे आप रिलेटिविटी डिफाइन कर रहे हो तो मास क्या है यहाँ पे? इट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज वी नो मास चेंजेस वंस इट कम्स इनटू मोशन एंड इट इज इन comparable to the say speed of light or it is moving with a very high speed, then mass becomes m equal to m naught 1 minus v square by c square, where m naught is called rest mass when the body was at rest, and once it starts moving with a high speed then its mass becomes changes. तो m क्या है यहाँ पे? Here m is, you see, this is not constant, m is also variable and this is also variable. So what will be ddt of mv, which we can write? So ddt of mv can be written as, you see, this is f is equal to ddt of mv. अब मास कांस्टेंट नहीं है तो क्या आएगा? फंक्शन, टू फंक्शंस का ले लीजिए. तो हाउ वी राइट इट? दैट इज फर्स्ट फंक्शन m into derivative of second plus second into derivative of first. This is f. This is what?
this is f. Now you see, let us write this to be equation number 3. We write this to be equation number 3. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, we will substitute the f, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, व्हाट वाज इक्वेशन नंबर 1, dt वाज इक्वल टू f dx. दिस वाज इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे अब आप ये f की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए. तो वी गेट dt इज इक्वल टू m, f की जगह ये लिख दिया dv over dt plus v dm over dt, and outside we have dx. We have dx. Now can we open this? We can write m. This is dv over dt into dx plus v dm over dt into dx, which is equal to, I am writing dx here and dv there. So m into dx over dt into dv plus v, यहाँ पे भी dx लिख लेते हैं, this is dx upon dt into dm. So we write in this manner, and then you see what is this? This is, what is dx over dt? This is velocity. What is dx over dt? This is velocity. So this is mv dv plus v into, this is again v. So v into v is v square into dm, and this gives you dt. This gives you dt. Let us write this to be equation number, क्या बोला था, 3, and let us write this to be equation number 4. ये equation आ गई. Now from equation number 2, consider equation number 2. Equation number 2 was m equal to m naught over 1 minus v square by c square under root. This was equation number 2. आप क्या करो, इस टर्म को यहाँ पे ले आओ, और इसका स्क्वायर कर दो. सो दिस इज m स्क्वायर, ये इधर स्क्वायर आएगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया, एंड ऑन दिस साइड दिस इज m नॉट स्क्वायर, और दिस इज m स्क्वायर, इनसाइड c स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया, c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर, इक्वल टू m नॉट स्क्वायर, और दिस इज m नॉट स्क्वायर, c स्क्वायर उधर ले जाइए आप, दिस इज m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर, m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर. नाउ व्हाट यू डू, you differentiate this equation, differentiating above equation, and by keeping in mind what, that this m is not a constant, m is what, variable. क्योंकि m यहाँ पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या आपके पास, m स्क्वायर, तो फर्स्ट फंक्शन इज m स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, c इज कांस्टेंट वेलोसिटी अप्लाइड, इसका 0 हो जाएगा, माइनस v स्क्वायर का हो जाएगा 2v dv, एंड दिस इज अगेन m नॉट स्क्वायर, दिस इज रेस्ट मास, दिस रिमेन्स कांस्टेंट आपके पास, और इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, m नॉट स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 0, दिस विल गिव यू 0, और माइनस योर दिस रिलेशन, सॉरी ये दूसरा तो किया ही नहीं हमने, वी आर नॉट डन, सॉरी, दिस इज डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन. सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड क्या आपके पास, c square minus v square into derivative of first. Derivative of first is 2m dm, and this is equal to 0. m naught square is constant, c is constant, so derivative is 0. और m square का आ जाएगा यहाँ पे derivative of m square is second function, derivative first 2m into dm. Yes, this is right now, or we can write minus twice m square v dv plus यहाँ पे आ गया आपके पास ट्वाइस एम सी स्क्वेयर डी एम माइनस ट्वाइस वी स्क्वेयर एम इंटू डी एम, एंड देन इट इज इक्वल टू 0, देन दिस इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आ गई आपके पास, और व्हाट वी कैन राइट, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज ट्वाइस एम सी स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास, ये रिलेशन आ गया, एंड दिस विल गिव यू एम वी डी वी, यहाँ से आप ये ले लीजिए, दिस इज
m, ये 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ से ये सारा कॉमन लेके तो ये चला जाएगा ये, और क्या इसमें है, m है, m है, m है, तो एक m ये चला जाएगा, एक m कांस्टेंट यहाँ से भी निकलेगा, एक m यहाँ से भी निकलेगा. सो वी आर लेफ्ट विद माइनस mv dv प्लस c स्क्वायर dm इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर dm. माइनस v स्क्वायर dm, sorry, minus v square dm is equal to 0. Minus v square dm equal to 0. और what we can write here, mvdv माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, it will be plus. So I am writing this thing, mvdv plus v square dm is equal to c square dm. Can we write in this manner? Yes, we can always write p square dm is equal to this equation. Now from equation number 4 and 5, 4 and 5, ये इसको आप कह दो 5. और equation number 4 देखिए क्या लिखी थी. Equation number 4 was dt is equal to mv dv and plus v square dm. If you check equation number 4, this is equation number 4. This is mv dv plus v square dm. अब आपके पास क्या है ये? This is equation number 4. This is equation number 5. Can we compare these two? mv dv, mv dv, v square dm, v square dm. तो ये आपके पास क्या है? ये एक साइड पे आ गया, is equal to dt. So this implies that dt is equal to c square dm. If we compare these equations, then obviously आप इसको यहाँ लिख लीजिए, चाहे mv dv plus v square dm is equal to dt. This is equation number 4. ये तो mv dv आपके पास ये v square dm, v square dm, c square dm, and this is dt. Here dt. So dt is equal to this, and we can write this to be equation number 6. This is equation number 6. अब ये देखिए आपके पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इन क्लासिकल मैकेनिक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, जब भी हम लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, क्योंकि टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वेयर वी इज द वेलोसिटी. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. बट इन रिलेटिविटी और इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स व्हाट यू ट्राइंग टू फाइंड दैट dt is equal to c square dm. dt is also what? This is kinetic energy and it is coming. This is called kinetic energy. आ रही है किससे आ रही है? c is constant and it is coming because of the change in mass. The body is in motion and it acquires a certain velocity and then its mass does not remain the same, it changes. And because of that change in mass, because of the motion, because of the change in mass, the energy is there. And this is known as the relativistic kinetic energy. So therefore, dt is equal to c square dm. It is coming because of the change in mass of the body once it is in motion, very high speed. In this case, now you see, if we want to calculate the total energy due to its motion and when the mass changes, and तो इसकी total energy निकालनी होगी, तो then we have to integrate equation number 6. Equation number 6. So integrating this equation number 6 to get the total kinetic energy, what we get? You see, this is integrating. इसको integrate करो, integral of dt, and this is integral of c square dm. यहाँ variable क्या है? Mass. तो mass क्या था? Rest mass कितना था? m naught. This is called rest mass of the body when the body was at rest, and once it is in motion, it is acquiring a mass m. तो इसको integrate करोगे आप from rest mass to mass m over dm. So we get, what is the integral of dt? This is t and this is c square is constant, and this is dm का क्या आ जाएगा? Integral m, and limit is m naught to m, और t is equal to c square into m minus m naught. Therefore, kinetic energy of a body, of a moving body, is equal to c square times the change in mass, and this change in mass is coming by virtue of the motion of the body. ठीक है? It is energy, relativistic kinetic energy is equal to c square times the change in mass. The mass after, when it is moving with the velocity, then its mass changes from m naught to m, and this is called relativistic kinetic energy. अब ये देखिए आपके पास, आप ऐसे भी लिख सकते हो, t is equal to mc square minus m naught c square.
और mc square is equal to t plus m naught square plus m naught square. और mc square क्या आप कहते हो? We say that this is the total energy. This is total energy, mc square, total energy of the body when it is in motion. When it is motion, then it is moving with a very high speed or with a high velocity, then this is equal to what is t? T is called relativistic kinetic energy, and plus m naught c square is called rest mass energy. Rest mass energy. And total energy we represent it by letter E, and letter E is equal to T plus m naught c square. E is equal to T naught plus m naught c square, and और E is equal to T, और T की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, यहाँ पे यू कैन ऑलवेज पुट, तो T की वैल्यू यहाँ पे पुट, यहाँ से ये और सिंप्लीफाई करना है, तो T इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर, ये लिखा हुआ प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर. So E is equal to mc square, which is called Einstein relativistic energy. E equal to mc square. That energy or mass equivalence है. This is called equivalence of mass and energy, and this is called relativistic equivalence. Mass energy equivalence is very important formula, and this is very important from the examination point of view, and this is called Einstein equation, energy mass equation. अब देखिए आप इसमें ये भी डिस्कस